जय गौर श्री राधारमणो विजयते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. I welcome you all to the Sutra Stotra and Shastra class of Nimai Pathshala. This week on Monday, we couldn't have the class because I was in Vrindavan and doing a lot of things because we completed 5 lakh family on that day. So I was in so much rush that I thought that I wouldn't be able to take the class. And we didn't have a class on Monday. But yesterday, when I told my team to put the message that we are going to have class tomorrow, everybody was startled because as we have always been together on all Ekadashis, we always do Vishnu Sahasranam on all Ekadashis. And I think Radha Ramanji deliberately made me cancel the Monday class so that we all can do Vishnu Sahasranam together on Indriya Ekadashi. How beautiful it is. Can you imagine how Radharaman Lal is planning that we all can do bhajan together so that this world can become a better place to live for all the people? This is his planning going on. And trust me, I was thinking I won't be able to reach back to the ashram by 8 o'clock, and that's why I didn't take the class. But I was back in the ashram by 7:30. And my team was like, Ma, even now we can put the message. It's all right. Children will come. But I told them that I'm not going to make all my children go crazy. That, oh my God, now we didn't plan that way. Now we are outside and Ma has kept the class. But trust me, this change of plan seemed to be mine, but it was his plan. So I'm really excited and I was so much motivated that Radharaman Lal, you are actually accepting all the small gestures we are trying to do to impress you, to tell you that how much we love you. So quickly, we'll do the Mangalacharan of the class. You know, this makes me feel so strong. I think I can win this world. I don't care who loves me, who hates me, who supports me, who doesn't support me. I have Radharaman Lal with me and I don't need anybody else. I feel so strong when Radharamanji tells me, don't use your brain too much, let me plan it for you. And that's the best plan in the world. So, quickly, we'll start with the class today. We are going to do the 5 shlokas of Bhagavad Gita. They are very, very important. Quickly, we'll do because we have to do Vishnu Sahasranam, Tulsi Archan with Vishnu Sahasranam. And today, I will make you all take darshans of my Priyaraman Mahaprabhu also because he's also ready and waiting to see all of you. Because I think last time when he came to the class, and he saw all of you, I could literally, when I was putting him to sleep, I could literally see him smiling broader. And I asked him what's happening, and he just conveyed from his heart to me that, I'm very happy that I was able to see all my bhaktas. नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. That wherever my disciples, my lovers, my people are thinking about me, missing me, I leave everything and I rush to that place. So I think I will definitely do Vishnu Sahasranam in my temple. But before that, we will quickly do Srimad Bhagavad Gita and the sutra for today. And then we'll move on to the Vishnu Sahasranam Stotram. This class is in English because this is the Monday class. Sunday and Tuesday classes have already been taken in Hindi. This Monday class couldn't happen because of many reasons. So this class is being held today. So first of all, who is going to sing the Mangalacharan for me? And then, okay. So we have a new bacha. Okay. Arshi will sing the Mangalacharan today. राधे श्याम भैया. The first time you're getting the opportunity to sing or the second time? मैम फर्स्ट टाइम. Okay. Radhe Radhe. राधे श्याम भैया, मैं स्टार्ट करती हूँ. Yes, बच्चे. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्य धीरते
तापात्र्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरु वैष्णवांशाय श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखावितांश I अहो love you because it's so difficult for you, but still you are trying to do it so beautifully, bache. So proud of you. But we'll sing this again. I'll sing it for you. You have to improve your pronunciation, but you are phenomenal. I can understand your tone, and it is very difficult for certain people to pronounce Sanskrit, but you are finding it difficult, but still you're brilliant. Wow. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यत्र यद्गुरोर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. I welcome you all again to the English class of Nimai Pathshala. So today we are going to do the 5 shlokas in a very crisp way of Srimad Bhagavad Gita chapter number 13, shlok number 11. Again, Srimad Bhagavad Gita chapter number 13, shlok number 11. Those who have the book with them, the scripture with them, please open it. I will first recite the shlok. I will read the meaning of it in Hindi and then I will explain the shlok to you deeply. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान नित्यम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप भगवान को ही देखना, ये सब ज्ञान है। और इसके विपरीत अन्यथा, इसके ऑपोजिट अज्ञानम, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। So it is very important, those who all understand that what is Gyan and what is Agyan. What is reality, what is important and what is not important. The day we know the difference between what is important and what is not important and what we should be doing to make our life better and productive, I think we will be successful in our lives. But the only problem in our life is that we get confused and we start thinking that the things that are not important are actually very important, and things that will actually matter in the end, we all say we'll do it tomorrow. It's not very important. This is not my age. I have lots of time to do it, and we ignore it. That is the signal of being the biggest ignorant in this world. So what is Bhagwan saying? Two kind of people. Adhyatma jnana mein nitya nirantar rehna. That means a person
who is always meditating upon me. You know, Adhyatma Gyan, this spiritual knowledge, is not just restricted to scriptures. It's not just restricted to Nimai Pathshala class. Or you can say it is not even restricted to kathas. What does Adhyatma Gyan means? Bhakti means thinking of the Lord and doing everything. Bhakti is not restricted to anything in this world. You name it and I say it, nothing. What is important that if you are meditating or thinking upon Radharaman, his happiness and doing anything, studying, walking, going out, cooking, doing anything, that is bhakti. Why? Because you are doing it for him. Bhakti means everything that you do for the Lord. And for that matter, this can be mala, this can be cooking prasadam in the kitchen, this could be reading scriptures to know what he likes and what he doesn't like, this could be going to the office and doing everything with purity so that you can do your duties well. Everything is bhakti. Bhakti means that you are studying for your examination with all your heart and dedicating every answer of the questions to Shri Radha Raman Lal. That Radha Raman Lal, some people recite Radha Kripa Katak, some people recite Gopi Geet, some people recite other stotras to you. But you know, my time is that strict that I have an exam tomorrow, and what all I can recite for you is my science examinations question answers. And trust me, Radha Raman Lal is going to hear it with all his heart. You're dedicating it for me? You know, whenever I go for my session, a lot of people out of love get so many things for me. I love it. I keep everything with me. And it's up to everybody that it's their choice whatever they get for me. But when they are getting it or buying it or making it for me, they are thinking about me. And that is the sign of love that they have for me. That attracts me towards them when they give it to me. And when they give it to me, that's a sign that whatever it is, they have done it for me. And trust me, whatever you do for me, it's special for me. The same for Radha Raman Lal. You are studying, you are working, you are learning, you are walking, you are taking care, you are doing mala, you are doing bhakti, you are going to the temple, you are going to Nani house, you are going to Chachi house, anywhere you go. But if you are thinking about Radha Raman Lal, if you are meditating about his happiness, you are doing bhakti. So that is Adhyatma Gan. That means Bhagavan is telling you, you always have to think about me. A person who's always meditating upon me and तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना. That means अनेक रूप रूपा. You cannot restrict Bhagavan to just one form. He is in that form for you, so that you don't get confused and you can love him as it is. If you think that Bhagwan is just one form in which Adharam is Maduram, Chalitam is Maduram, Vaditam is Maduram, Hasitam is Maduram, Maduradipate Akhilam Maduram. But trust me, that same Radharaman, sometime when some people do wrong to his devotees, become Namaste नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दाहिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटंकार नखालाये. So that is also Radharaman. So you always have to believe that we have to see him in every creation in this world. If people are clear about these two things, one, that whatever I do, it is for Radharaman, that means I am doing bhakti with every breath I take. And second, I see Radharaman in everything around me. And when you see Radharaman in everything around you, trust me, when you know that the person standing in front of you is a form of Radharaman, would you ever be able to do anything wrong to him? And when you won't do anything wrong to him, do you think you will be able to do any aparad in your life?
and this is how you are saved. So these two things are very important. Always meditate upon Radha Raman and see Radha Raman in all his creation. Bhagwan says a very beautiful thing. Very, very beautiful. I have heard this from Maharaj Ji many times. The irony in this world is that we are trying to see God in the deities created by man. But the funny bit is, we are not able to see Radha Raman in the beings created by Radha Raman himself. How crazy is that? Humans are making deities and we are trying to look for Radha Raman in that. And the humans that are being created by Radha Raman, we don't see Radha Raman in him. How is this possible? So, Bhagwan says the person who has clarity on this is intelligent, has the scope to win this world. But people who think that this material world, this material life is the only reality, there is no gati after this, there is no journey after this, whatever we have it here, there is nothing beyond it, they are the biggest fools. The second shlok says, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. दैट मीन्स जो जानने योग्य है, जिसको जानकर परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा. वो अनादि वाला पर ब्रह्म न सत्य है और ना ही असत. So yesterday I tried to explain this shloka with the help of an example. For example, you have a glass that is only 50 ml big, and you go to a river and you are very, very sad and complex and crazy because in the glass of 10 liters you are trying and wanting to put water which is 50 liters. How will a glass which has 10-liter capacity will hold 50 liter of water? Do you think it is possible? So our brain is only 10-liter big, but the qualities of Shri Radharaman Lal are 10,000 crore liters big. So if you'll try that I should know everything about Radharaman Lal, that is impossible. Radharaman Lal is the biggest reality and it is the biggest not reality as well. He is nothing, but he is everything as well. He is a deity and he is the form of energy as well. He is Brahma, he is Paramatma as well. He is Paramatma, he is Bhagavan as well. He is Bhagavan, he is Brahma as well. So when you think about the Lord, he has indefinite forms. So Bhagavan is telling that when I start to love you, whenever I see that you are a good person trying to do good things in life, then I send somebody in your life who will guide you towards that one form that I will take only for you. And after that, you don't have to understand any other thing in this world. For example, a girl who's working in an office goes to the office, she's not married as yet, and when she sees handsome boys in the office, she looks at all of them and says, oh my God, he's so handsome. I wish he could be my husband or boyfriend. Oh wow, the boss is looking so good today. I wish he could be my husband. Every man she would see her husband. But one day she met a very nice human and she got married. Now she has a sindoor, and now when she goes to the office, no matter how many handsome boys are around her, she doesn't get deviated anymore. I don't care who is there or who's not. I have my man. I just need to know only about him, and now I don't care about anybody else. The same way, when you meet your Ishta,
When you meet your Radha Raman, when you meet your form of Bhagwan, after that, you don't need to know anything else. Bhagwan is saying that is the only thing you need to know, and beyond that is something that is not for you, is not of your syllabus. Third shlok. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. तत् वह सब और हाथ पैर वाला, सर्वतोक्षी शिरोमुखम सब और नेत्र सिर मुख वाला, सर्वतः श्रुतितम सब और कान वाला, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है. In this world there is nothing that is different from Shri Radharaman Lal. Radharaman Lal is anek roop roopaya, sahastra murdha vishwatma sahasraksha sahasrapad, the one with thousands of heads, thousands of arms, thousands of ears. You know, as many people are there in this universe, Bhagwan has more than that forms. Every human has his own Bhagavan with him always. It doesn't matter you believe in him or you don't believe in him. Your form of God, the God that belongs to you, is always with you and always monitoring your actions, writing each one of it. Don't ever think that Radharaman must be very busy because he has so many disciples. Why would he see us? Trust me. He is not just one, he is Ananta. Your Radharaman is yours exclusively. Playing with you, smiling at you, looking at you, talking with you, being with you in your tough times, celebrating with you in your happy times, being the shoulder for you whenever you are sad. Your Radharaman is only and only yours, and my Radharaman is only and only mine. Don't ever think that there is one Radha Raman and there are so many people that belong to him. Everybody who belongs to Radha Raman has his own Radha Raman. And that's the beauty. That's why he's God. He's not a human. He can be that way. That is why he's God. So, Bhagwan is saying that you have to believe that I am everywhere. You know, like how everywhere? I just gave an example yesterday. So, if you see a pen and there is ink in the pen, so can you tell me how many languages does the pen know? You'll be like, Ma, what kind of weird question is this? The pen would not know any language. The person who is holding the pen, whatever language that person would know, the pen would write that same language. Right? So ideally, pen knows all the languages. The ink of the pen has all the languages within it because it can write all of it. Right or wrong? The same way, every being creation, Thakurji's para and appara prakriti. Para means everything that is alive, everything that is moving, and appara, everything that is not moving, that is not alive, like mountains, trees, all these things. All are a form of him. Everything has Radha Raman within it. So you cannot say that a tree doesn't have Radharaman in it. The tree also has Radharaman. Humans also have Radharaman is there in everything in this universe. Kankar bhi Shankar hai. If you believe and have the eyes to look at that Kankar in that way. Second last shlok of Srimad Bhagavad Gita class today. Sarvendriya gunabhasam sarve indriya vivarjitam asaktam sarvabhrichaiva nirgunam gunabhokatricha.
सर्वे इंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति से रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है. So whatever you think is God for you, he will become that for you. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्. Radharaman Lal says, you love me, and if you start believing na that this glass of water is a form of me, trust me, I will become this water for you and guide you in your life. What is Bhagavan? Bha se bhumi, ga se gagan, va se vayu, a se agni, or na se neer. Neer means water, jal. That is what Bhagavan is. So your belief is the most important thing. So Bhagavan is saying, I am somebody who has a form, but I am also that somebody who is formless. I am somebody who is unattached to the whole world. I am residing in the hearts of everybody. But at the same time, I am always there for my Vaishnavas and Bhaktas. I'm always doing everything and anything. Swanigama pahaya mat pratigya. So Bhishma Stuti Bhagavan is saying, I have broken all my pratigyas, all my promises only for my bhaktas. Trust me. And on the other hand, he's saying, I'm unattached. I am not partial towards anybody. My hands up, I'm not partial. And he's doing everything to save his Vaishnavas and Bhakta. That's the cuteness and beauty of my Radharaman. So you think of him, he become that for you. Trust me. So in the last shlok, what is Bhagavan saying? Bahirantascha bhutanam acharam charamev cha sukshmatvat tad vigyeyam durastham chantike chatat. भूता नाम बहि अंतः, चराचर सब भूतों के बाहर भीतर, और चरम अचरम, चर और अचर रूप से भी और भी सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप और दूरी में भी स्थित वही हैं. सो एवरीथिंग दैट कैन, चर मीन्स चलित, that can walk. Achar means that cannot walk. That is there at one place. Then what can breathe, what cannot breathe. Everywhere, whatever you see outside, whatever you see inside, it's all me. The things that can walk is me. The things that cannot walk is me. Outside it's me, inside it's me. If you see things that are not even visible by your naked eyes, that are very far, like planets, that are also me. And things that are very close and very small, like atoms, protons and neutrons, hey, that's also me. Hello. So Bhagwan is literally everything. So you have to love everything in this universe, because everything is a form of him. That he himself is declaring that this is me. So just spread love, just spread smiles, just spread that warmth in the world. Trust me, when you'll do that, that love of mine you'll feel in your life. So it is very important that you have to refine your vision. You have to refine your thinking. You cannot change the world, but you have to change yourself to make your world beautiful. You have to always do everything for Radharaman. Trust me, I do. I practice this in my daily life. No matter what happens, I seek permission from him that should I do this? Even though, when I'm leaving the house, I tell Priya Ramanju, I'm going for some time, you take care, I'll be back soon. So that he becomes more careful in the house when I'm not there. So just that belief that he's just not somebody who's sitting in your temple, but he's the one who is taking care of your entire universe. And when you believe that, trust me, your world is guided by him. On this note, we'll end Srimad Bhagavad Gita, because it's already 8:36, so we have to start with Vishnu Sahasranam, because then we get very late. So today we'll skip the sutra part and quickly we'll move on to the
Vishnu Sahasranam part. That's the most beautiful part of every Ekadashi, because this is the best seva, the most loved seva that Thakurji likes on Ekadashi specially. Because on Ekadashi, Thakurji has given blessing to Ekadashi that whosoever fasts on Ekadashi and meditates on my name, does chanting, do good things, do Brahman seva, does Tulsi Archana, they all are very, very dear to me. Trust me, if you do Tulsi Archana on Ekadashi, you make Radha Raman very, very happy. You know, my when I initially started bhakti, so at that time I was very, very new. So when I started it, the first thing that I started in my life was Gau Seva. When I started doing Gau Seva, then eventually what I realized was that my concentration and my dedication towards my chanting also improved. Gau Mata blessed me so beautifully that my chanting, my dedication, my concentration, my thinking for Radha Raman really got deepened. And when this got deepened, then Radha Ramanji through Maharajji guided me that I should do Tulsi Archan every day. So with Namavali of Thakurji, thousands name of Bhagwan, I used to do Archan every day. And trust me, I think that is the seed from where the entire, you could say, the process of Nimai Pathshala started. If you go to very previous classes, I used to do Tulsi Archan live on Facebook every Kadashi. If you go like 3-4 years back, that was my one seva I used to do very dedicatedly. So Tulsi Archan, you know why? Because Kalyug Keval Nama Adhara. In Kalyug, if you take shelter of the name of Bhagwan, you are doing everything. You don't have to do anything else if you are taking the name of the Lord. And Vishnu Sahasranam is just not one name. These are those 1008 Siddh names. Those names that have been meditated upon by Acharyas, Sant and Sadhus, and Bhagwan has become happy and given blessings to these names. And that is why these names are so powerful. If you tell me, Khushi is also a name of God. Arushi is also name of Radharaman. Rishika is also name of Radharaman. But these are regular names. But when you talk about Vishwasmai Namaha, Vishname Namaha, Vashtakaraya Namaha, then you talk about these names, these are Siddha names of Bhagavan. That when you chant these names, your heart and your bhakti becomes powerful. So quickly, we'll do Mangla Charan first of Vishnu Sahasranam. Who is going to sing the Mangla Charan for me? Okay, Tanishka Kanojia ji will sing the Mangla Charan. You cannot move a video while people are spotlighted. Diksha, please help. Yes, I can unmute you now. Yes, Tanishka. You start till that time, I'll go in my temple and I'll set so that you can see Priya Ramanju. And while chanting, Priya Ramanju is very, very merciful. His both the hands are like this. So he's always giving, 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 giving. So when you seek from him, whatever you seek from him, he always blesses a Vaishnav with all of that. So we'll sit in front of him, we'll make him happy, we'll plead in his lotus feet that please give us the qualities of a good Vaishnav so that Radha Raman Lal becomes happy and takes us in his shelter. That should be the ultimate goal of every Vaishnav. So Tanishka will start with Mangla Charan and I'll adjust myself in the temple. Okay, Tanishka. Radhe Radhe Beta. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथनं यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे
Shri Ram. Radha Lal ki. Very good, beta. So we'll start with Vishnu Sahasranam now. So everybody can hold one dal of tulsi in your hand, and if you have more, then you can offer accordingly. But if you don't have more, then you can just hold one and say Namaha Namaha with me, and then in the end we'll offer that tulsi in the lotus feet of Priya Raman Lal or the form of Thakurji that is there in your home. So you can see Priya Raman Lal was waiting for all of you with a lot of excitement. Yes, so you all must take darshans today. It's okay. Can you all see me? Namrita, can you see me? Can you see Thakurji? You can see both? Thakurji, no? Vaishnav is saying thumbs down. Are we good now? Om ओम विश्वस्मै नमः ओम विष्णवे नमः ओम वष्टकाराय नमः ओम भूतभवय भवत्प्रभवे नमः ओम भूतकृते नमः ओम भूतभृते नमः ओम भावाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम भूतभावनाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम मुक्तानां परमगतये नमः ओम अव्याय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम क्षेत्रज्ञाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम योगाय नमः ओम योग विदाम नेत्रे नमः ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः ओम नारसिंह वपुषे नमः ओम श्रीमते नमः ओम केशवाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम सर्वस्मै नमः ओम शरवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्थानवे नमः ओम भूतादिये नमः ओम निधये अव्याय नमः ओम संभवाय नमः ओम भावनाय नमः ओम भर्त्रे नमः ओम प्रभवाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम शंभवे नमः ओम आदित्याय नमः ओम पुष्कराक्षाय नमः ओम महास्वनाय नमः ओम अनादि निधनाय नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम धातुरुत्तमाय नमः ओम अप्रमेयाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम अमर प्रभवे नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम मनवे नमः ओम त्वष्ट्रे नमः ओम स्थविष्ठाय नमः ओम स्थवीराय ध्रुवाय नमः ओम अग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम लोहिताक्षाय नमः ओम प्रतर्दनाय नमः ओम प्रभुताय नमः ओम त्रिकुब्धामने नमः ओम पवित्राय नमः ओम मंगलाय परस्मै नमः ओम ईशानाय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम ज्येष्ठाय नमः ओम श्रेष्ठाय नमः प्रजापतिये नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम भूगर्भाय नमः माधवाय नमः मधुसूदनाय नमः ईश्वराय नमः ओम विक्रमणे नमः धन्विने नमः मेधाविने नमः विक्रमाय नमः क्रमाय नमः ओम अनुत्तमाय नमः दूरदर्शाय नमः कृतज्ञाय नमः कृतये नमः ओम आत्मवते नमः सुरेशाय नमः शरणाय नमः शर्मणे नमः ओम विश्वरेत्से नमः अनिहे नमः संवत्सराय नमः व्यालाय नमः ओम प्रत्याय नमः सर्वदर्शनाय नमः अजाय नमः सर्वेश्वराय नमः ओम सिद्धाय नमः सिद्धिये नमः सर्वादे नमः अच्युताय नमः। पहले 100 नामों के माध्यम से हमने कर लिया, अब 101वां नाम। ओम वृषा कपये नमः मेयात्मने नमः सर्वयोग विनिसिताय नमः ओम वसवे नमः वसुमनसे नमः सत्याय नमः समात्मने नमः ओम संमिताय नमः समाय नमः मोघाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः ओम वृषकर्मणे नमः वृषाकृते नमः रुद्राय नमः बहुशिश्रे नमः ओम बभ्रवे नमः विश्वयोनिये नमः शुचिशवसे नमः ओम अमृताय नमः शाश्वस्थानवे नमः वरारोहाय नमः ओम महातपसे नमः सर्वगाय नमः सर्वविद्वानवे नमः ओम विश्वक्सेनाय नमः जनार्दनाय नमः वेदाय नमः ओम वेदविदे नमः व्यंगाय नमः वेदांगाय नमः ओम वेदविदे नमः कविये नमः लोकाध्यक्षाय नमः सूरदक्षाय नमः धर्माध्यक्षाय नमः कृताकृताय नमः चतुरात्मे चतुर्विहाय नमः चतुर्दंष्टाय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः भ्राजिष्णे नमः भोजनाय नमः भोक्त्रे नमः ओम सहिष्णुवे नमः जगदाधिजाय नमः अनगाय नमः विजयाय नमः जैत्रे नमः विश्वयोनिये नमः ओम पुनर्वसवे नमः उपेन्द्राय नमः वामनाय नमः प्रांशवे नमः ओम अमोघाय नमः शुचिये नमः उदिताय नमः तीन्द्राय संग्रहाय सर्गाय नमः जितात्मने नमः ओम नियमाय नमः यमाय नमः वेदाय नमः वैद्याय नमः सदा योगिने नमः ओम वीरने नमः माधवाय नमः मध्वे नमः तीन्द्रियाय नमः ओम महामायाय नमः मोत्साय नमः महाबलाय नमः महाबुद्धियाय नमः ओम महावीराय नमः महाशक्ति नमः महाद्युतीय नमः ओम अनिर्देश्य वपुषे नमः श्रीमते नमः न्याय ओम महादीर्घुषे नमः ओम महेश्वासाय नमः महीभर्त्रे नमः श्रीनिवासाय नमः ओम सतामगते नमः निरुद्धाय नमः सुरानंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविदांपते नमः रीचि नमः हंसाय नमः दमनाय नमः हंसाय नमः सुपर्णाय नमः भुजगोत्तमाय नमः ओम हिरण्यनाभाय नमः सूतपसे नमः पद्मनाभाय नमः प्रजापतिये नमः अमृतवे नमः ओम सर्वदिशे नमः सिंहाय नमः।
200 नामों के द्वारा हम लोगों ने अर्चन कर लिया है। अब ओम संधाते नमः, संधिमते नमः, स्थिराय नमः, ओम अजाय नमः, दूरमर्शनाय नमः, शास्त्रे नमः, ओम विश्रुतात्मे नमः, सुराय नमः, गुरुवे नमः, गुरुत्तमाय नमः, धामने नमः, सत्याय नमः, सत्यपराक्रमाय नमः, निमिषाय नमः, अनिमिषाय नमः, सर्वज्ञ वाचस्पति उदाहरणीय नमः, ओम अग्रणे नमः, ग्रामणे नमः, श्रीमते नमः, न्याय नमः, नेत्रे नमः, समीरणाय नमः, सस्मूर्धने नमः, विश्वात्माय नमः, सहस्त्राक्षाय नमः, सहस्प्रदे नमः, आवर्तनाय नमः, निवृतात्मे नमः, समृताय नमः, ओम संप्रमर्दनाय नमः, असंवर्तकाय नमः, वन्ये नमः, अनिलाय नमः, धनिधराय नमः, ओम सुप्रसादाय नमः, प्रसन्नात्मे नमः, विश्वक्षे नमः, विश्वभुजे नमः, विभुवे नमः, ओम सत्कर्तरे नमः, सत्कृताय नमः, साध्वे नमः, जानवे नमः, नारायणाय नमः, नराय नमः, संख्याय नमः, प्रमेयात्मने नमः, ओम विशिष्टाय नमः, शुष्कते नमः, सुच्ये नमः, सिद्धार्थाय नमः, सिद्ध संकल्पाय नमः, सिद्धिदाय नमः, सिद्धिसाधाय नमः, ओम वृषायणे नमः, विषभाय नमः, विष्णवे नमः, विषपर्वणे विशोदराय नमः, वर्धनाय नमः, वर्धमानाय विविक्ताय नमः, श्रुतिसागराय नमः, ओम सुभुजाय नमः, दुर्धराय नमः, वागीम्ने नमः, महेन्द्राय नमः, वसुदाय नमः, वस्वे नमः, नैकृपाय नमः, बृहद्रूपाय शिपिविष्टाय नमः, ओम प्रकाशनाय नमः, ओजस्ते ज्योतिधराय प्रकाशात्मने प्रतापनाय नमः, ओम रिद्धाय नमः, स्पष्टाक्षराय नमः, मंत्राय नमः, चंद्रांशवे नमः, भास्करद्युतीय नमः, अमृतांशुद्भवाय नमः, भान्वे नमः, शशिबिन्वे सुरेश्वर औषधाय नमः, जगत हेतवे नमः, सत्य धर्म पराक्रमाय नमः, भूत भव्य भवनाथाय नमः, पवनाय नमः, पावनाय नमः, अनलाय नमः, कामग्ने नमः, कामकृते नमः, कांताय नमः, कामाय नमः, कामप्रदाय नमः, ओम प्रभवे नमः, युगाधिकृते नमः। 300 नामों के द्वारा हमने अर्चन कर लिया है। ओम युगावर्ताय नमः, नेकमायाय नमः, महाशनाय नमः, अदृश्याय नमः, व्यक्तरूपाय नमः, ओम सहस्त्रजिते नमः, अनंतजिते नमः, इष्टाय नमः, विशिष्टाय नमः, शिष्टेष्टाय नमः, शिखंडिने नमः, नहुषाय नमः, वृषाय नमः, क्रोधग्ने नमः, क्रोधकृते नमः, विषभावे नमः, महिधराय नमः, ओम अच्युताय नमः, प्रचिताय नमः, प्राणाय नमः, प्राणदाय नमः, ओम वासवानुजाय नमः, पामनिधिये नमः, अधिष्ठानाय नमः, प्रमत्ताय नमः, प्रतिष्ठाय नमः, स्कंदाय नमः, स्कंधराय नमः, दूर्याय नमः, वरदाय नमः, वायुवाहनाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, बृहद्भान्वे नमः, आदिदेवाय नमः, पुरंदराय नमः, शोकाय नमः, तारणाय नमः, ताराय नमः, शूराय नमः, शौर्ये नमः, ओम जनेश्वराय नमः, कूलाय नमः, शतवर्ताय नमः, पद्मिने नमः, पद्मभीक्षणाय नमः, पद्मनाभाय अरविंदाक्षाय नमः, ओम पद्मगर्भाय नमः, शरीरभिदे नमः, मृद्ये नमः, रिद्धाय नमः, वृद्धात्मे नमः, माक्षाय नमः, गरुध्वजाय नमः, तुलाय नमः, शर्भाय नमः, भीमाय नमः, ओम समयज्ञाय नमः, हवीर हरिये नमः, सर्वलक्षण लक्षणाय नमः, लक्ष्मीमते समितिंजयाय नमः, विक्षाय रोहिताय नमः, मार्गाय नमः, हेतवे नमः, दामोदराय नमः, ओम सहाय नमः, महिधराय नमः, महाभागाय नमः, वेगवते नमः, मिताशनाय उद्भवाय नमः, शोभनाय नमः, देवाय नमः, श्री गर्भाय नमः, परमेश्वराय नमः, करणाय नमः, कारणाय नमः, कर्त्रे नमः, विकर्त्रे नमः, गहनाय नमः, गुहाय नमः, ओम व्यवसायाय नमः, ओम व्यवस्थानाय नमः, संस्थानाय नमः, स्थानदाय नमः, ध्रुवाय नमः, ओम परार्दिये नमः, ओम परम स्पष्टाय नमः, तुष्टाय नमः, पुष्टाय नमः, शुभेक्षणाय नमः, रामाय नमः, विरामाय नमः, विरजाय नमः, मार्गाय नमः, ओम न्याय नमः, ओम न्याय नमः, ओम अन्याय नमः। 400 नामों के द्वारा हम सबके कर्णों के माध्यम से प्रेम की जो एक एक तुलसी दल है ठाकुर जी के चरणों पे समर्पित करते चलिए। ओम वीराय नमः, शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः, धर्माय नमः, धर्म विद्युतमाय नमः, विकुंठाय नमः, पुरुषाय नमः, प्राणाय नमः, प्राणदाय नमः, ओम प्रणवाय नमः, पृथ्वी नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, शत्रुघ्नाय व्याप्ताय नमः, वायवे नमः, दोक्षाय नमः, ऋत्वे नमः, सुरष्णाय नमः, ओम कालाय नमः, परमेष्ठिने नमः, परिगृहाय नमः, उग्राय नमः, संवत्सराय नमः, ओम दक्षाय नमः, विश्रामाय नमः, विश्वदक्षिणाय नमः, विस्ताराय नमः, स्थावस्थानवे नमः, ओम प्रमाणाय नमः, बीजव्याय नमः, अर्थाय नमः, अर्थाय नमः, महाकोशाय नमः, ओम महाभोगाय नमः, महाधनाय नमः, निर्विनाय नमः, स्थविष्ठाय नमः, अभुवे नमः, धर्मयुपाय नमः, ओम महामखाय नमः, नक्षत्र नेमिये नमः, ओम नक्षत्रिणे नमः, शमाय नमः, श्यामाय नमः, समीहनाय नमः, ओम यज्ञाय नमः, यज्ञाय नमः, मेज्याय नमः, कृत्वे नमः, सत्राय नमः, सतां गतिये नमः, ओम सर्वदर्शिने नमः, विमुक्तात्मने नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ज्ञान उत्तमाय नमः, सुव्रताय नमः, सुमुखाय नमः, सूक्ष्माय नमः, ओम सुघोषाय नमः, ओम सुखदाय नमः, सुहृदे नमः, मनोहराय नमः, जित्क्रोधाय नमः, वीरभावे नमः, विदारणाय नमः, स्वाप्नाय नमः, स्ववशाय नमः, ओम व्यापिने नमः, ओम नेकात्मने नमः, नेककर्मकृते नमः, वत्सराय नमः, वत्सलाय नमः, स्वत्सिने नमः, रत्नगर्भाय नमः, धनेश्वराय नमः, धर्मगुपे नमः, धर्मकृते नमः, धर्मिणे नमः, ओम सते नमः, शराय नमः, अक्षराय नमः, विज्ञात्रे नमः, सहस्त्रांशवे नमः, ओम विधात्रे नमः, कृतलक्षणाय नमः, गभिस्नेमिये नमः, सत्वस्थाय नमः, सिंहाय नमः, भूतमहेश्वराय नमः, आदिदेवाय नमः, महादेवाय नमः, देवेशाय नमः, देववृत गुरवे नमः, ओम उत्ताराय नमः, गोपति नमः, गोप्ते नमः, ज्ञान गम्याय नमः, पुरातनाय नमः, शरीर भूभृते नमः, भोक्त्रे नमः, ओम भोक्त्रे नमः। 500 नामों के द्वारा हम सब ने अर्चन कर लिया है। आइए 501 एक नंबर पे हम लोग आगे बढ़े। ओम कपींद्राय नमः, ओम भूरि दक्षिणाय नमः, सोमपाय नमः, अमृतपाय नमः, ओम सोमाय नमः, पुरुजिते नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, विन्याय नमः, जयाय नमः, सत्यसंघाय नमः, दाशरहाय नमः, सात्वतां पतिये नमः, जीवाय नमः, विनीत साक्षिणे नमः, मुकुंदाय नमः, अमित विक्रमाय नमः, अम्बो निधये नमः, अनंतात्मने नमः, उददीशाय नमः, ओम अनंतकाय नमः, जाय नमः, माराय नमः, स्वाभाव्याय नमः, ओम जितामित्राय नमः, प्रमोदनाय नमः, आनंदनाय नमः, नंदनाय नमः, नंदाय नमः, सत्यधर्मणे नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ओम महर्षि कपिलाचार्याय नमः, कृतज्ञाय नमः, मेदिनीपते नमः, तृप्ताय नमः, तिदशादक्षाय नमः,
नमः। ओम महाशिंगाय नमः, कृतांकृते नमः वः। ओम महावराहाय नमः, गोविंदाय नमः, सुशेषनाय नमः, कंकांगिने गुहाय नमः, गभीराय नमः, गहनाय नमः, गुप्ताय नमः, चक्रगदाधराय नमः। ओम वेदसे नमः, स्वंगाय नमः, हिताय नमः, कृष्णाय नमः, दृढाय नमः, संकर्षणच्युताय नमः, वरुणाय नमः। ओम वारुणाय नमः, वृक्षाय नमः, पुष्कराक्षाय नमः, महास्वनाय नमः, नादि निधनाय नमः। ओम महामनसे नमः, भगवते नमः, भग्ने नमः, नंदिने नमः, वनमालिने नमः। ओम हलायुधाय नमः, आदित्याय नमः, ज्योतिरादित्याय सहिष्णुवे नमः, जगदादिजाय नमः, गति सत्तमाय नमः। ओम सुधन्वने नमः, खंड पराश्वे नमः, दरुणाय नमः, द्रव्यप्रदाय नमः, दिवस्पृशे नमः, सर्वदिग्व्यासाय नमः, वाचस्पति अयोनिजाय नमः, त्रिसाम्ने नमः, सामगाय नमः, सामने नमः, निर्वाणाय नमः, बेजाय नमः, भुजे नमः, संन्यासकृते नमः। ओम क्षमाय नमः, शांताय नमः, निष्ठायै नमः, शांत्यै नमः, परायणाय नमः, शुभांगाय नमः। ओम शांतिदाय नमः, षष्ठे नमः, कुमुदाय नमः, कुवलेशाय नमः, गोहिताय नमः, गोपते नमः, गोप्त्रे नमः। ओम वृषभाक्षाय नमः, विष्प्रियाय नमः, निर्वर्तिने नमः, निवृत्तात्मने नमः। ओम संक्षेप्त्रे नमः, क्षेमकृते नमः, शिवाय नमः। 600 नामों के द्वारा हम लोगों ने अर्चन किया। आइए आगे बढ़ते हैं। ओम श्री वत्स वक्षसे नमः, शिवासाय नमः, श्रीपति नमः, श्रीमतांबराय नमः, श्रीदाय नमः, श्रीशाय नमः, श्रीनिवासाय नमः, श्रीनिधि नमः, श्रीविभावनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः, श्रीकराय नमः, श्रीसे नमः, श्रीमते नमः, लोकत्राक्षाय नमः, स्वक्षाय नमः। ओम स्वंगाय नमः, शतानंदाय नमः, नद्ये नमः, ज्योतिर्गणेश्वराय नमः, विजितात्मे नमः, विधेयात्मे नमः। ओम सत्कीर्ते नमः, छिन्नसंशयाय नमः, उदीर्णाय नमः, ओम सर्वचक्षुषे नमः, ओम अनीशाय नमः, ओम शाश्वतशिराय नमः, भूषाय नमः, भूषणाय नमः। ओम धूते नमः, विशोकाय नमः, शोकनाशनाय नमः, अर्चिष्मते नमः, अर्चिताय नमः, कुंभाय नमः। ओम विशुद्धात्मे नमः, विशोधनाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, प्रतिरथाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः, काल नेमिनिग्ने नमः, वीराय नमः, शौर्य नमः, शूर्जनेश्वराय नमः, त्रिलोकात्मे नमः, त्रिलोकेशाय नमः, केशवाय नमः, केशिग्ने नमः। ओम हरिये नमः, कामदेवाय नमः, कामपालाय नमः, कामिने नमः, कांताय नमः, कृताग्माय नमः। ओम अनिदेशवपुषे नमः, विष्णवे नमः, वीराय नमः, अनंताय नमः। ओम धनंजयाय नमः, ब्रह्मणाय नमः, ब्रह्मकृते नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्राह्मणे नमः, ब्रह्मविवर्धनाय नमः, ब्रह्मविदे नमः, ब्राह्मणाय नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मज्ञान ब्राह्मण प्रियाय नमः, महाक्रमाय नमः। ओम महाकर्मणे नमः, महातेजसे नमः, ऊर्गाय नमः, महाकृत्वे नमः, महायज्ञने नमः, महायज्ञाय नमः। ओम महाविषये नमः, स्तभ्याय नमः, स्तप्रियाय नमः, स्तोत्राय स्तुत्ये नमः, स्तोत्रे नमः, रणप्रियाय नमः। ओम पूर्णाय नमः, पूरित्रे नमः, पुण्याय नमः, पुण्यकीर्तनाय नामयाय नमः, ओम मनोजवाय नमः। ओम तीर्थकराय नमः, वसुरेत्से नमः, वसुप्रदाय नमः, वासुप्रदाय नमः, वासुदेवाय नमः, वसवे नमः। ओम वसुमनसे नमः, विषये नमः, सद्गत्ये नमः, सत्कृत्ये नमः। ओम सत्तायै नमः, सद्भूतये नमः, सत्परायणाय नमः, शूषेनाय नमः, दुष्टाय नमः, सन्निवासाय नमः। भैया ट्रेन थोड़ी आगे चली गई। 706 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 700 से प्रारंभ करेंगे दोबारा से। ओम सत्ताये नमः, सद्भूतिये नमः, सत्परायणाय शूर्षेनाय नमः। ओम यदुश्रेष्ठाय नमः, सन्निवासाय नमः, स्वयंमुनाय नमः, भूतवासाय नमः, वासुदेवाय नमः, सर्वसुनिलाय नमः, अनिलाय नमः, दर्पणे नमः। ओम दर्पदाय नमः, दृप्ताय नमः, दुर्धराय नमः, अपराजिताय नमः, विश्वमूर्तिये नमः, महामूर्तिये नमः, दीप्तमूर्तिये नमः, अमूर्तिमते नमः। ओम अनेक मूर्तिये नमः, व्यक्ताय नमः, शतमूर्तिये नमः, शताननाय नमः, एकस्मै नमः, अनेकस्मै नमः, शिवाय नमः, काय नमः, कस्मै नमः, यस्मै नमः, तस्मै नमः। ओम पद्मोत्तमाय नमः, लोकबंधवे नमः, लोकनाथाय नमः, माधवाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः। ओम सुवर्णवर्णाय नमः, हेमंगाय नमः, रंगाय नमः, चंदांगिने नमः, विघ्नेन विष्माय नमः, शून्याय नमः, घृताशीषाय नमः। ओम अचलाय नमः, चलाय नमः, मानिने नमः, मानदाय नमः, मान्याय नमः, लोकस्वामिने नमः। ओम त्रिलोकऋषे नमः, सुमेधसाय नमः। ओम मेधजाय नमः, धन्याय नमः। ओम सत्यमेधसे नमः, धराधराय नमः, तेजोविषाय नमः, धृतिधराय नमः, सर्वशस्त्र विदाम्बराय नमः, प्रग्रहाय निग्रहाय विग्रहाय नमः, नेक्षिंगाय नमः, गदग्रजाय नमः, चतुर्मूर्तिये नमः, चतुर्भावे नमः, चतुर्विहाय नमः, चतुर्गते नमः, चतुरात्मे नमः, चतुर्भावाय नमः, चतुर्वेद विधि में एक पदे नमः, समवर्ताय अनिवृत्तात्मने नमः, दुर्जयाय नमः, दुर्तिक्रमाय दुर्लभाय नमः, दुर्गमाय नमः, दुर्गाय नमः, दुरावासाय नमः। ओम दुरारिग्ने नमः, शुभांगाय नमः, लोकसारंगाय सुतंतवे नमः, तंतुवर्धनाय नमः, इंद्रकर्मणे नमः, महाकर्मणे नमः, कृतकर्मणे नमः। ओम कृतागमाय नमः, उद्भवाय नमः, सुंदराय नमः, सुंदाय नमः, रत्नाभाय नमः, सुलोचनाय नमः, अर्काय नमः। ओम वाजस्नाय नमः, शंग्ने नमः, जयंताय नमः, सर्वजिने नमः, सुवर्ण बिंदवे नमः। 800 नामों के द्वारा हमने अर्चना कर ली है। आइए 200 नाम केवल शेष बचे हैं। खूब मन से, हृदय से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए हम अपने तुलसी जी में अपने उस प्रेम को भर भर के डालें, जो अंत तो गत्वा, जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां पर जाकर विराजमान होने वाली है, जो कि ठाकुर जी के चरणारविंद है। ओम अक्षोभ्याय नमः, सर्ववागीश्वराय नमः, महाहृदाय नमः, महागर्ताय नमः, महाभूताय नमः, महानिधिये नमः। ओम कुमुदाय नमः, कुंद्राय नमः, कुंदाय नमः, पर्जन्याय नमः, पावनाय नमः, लीलाय नमः। ओम अमृतांशाय नमः, अमृतवपुषे नमः, सर्वज्ञाय नमः, सर्वोत्तमुखाय नमः, सुलभाय नमः, सुवृताय नमः, सिद्धाय नमः, शत्रुजिते नमः। ओम शत्रुतापनाय नमः, न्यग्रुदाय नमः, उदुम्बराय नमः, श्वथाय नमः, चाणूराय निषूदनाय नमः। ओम सस्ताजिषे नमः, सप्तजिह्वाय नमः, सत्यगसे नमः, सप्तवाहनाय नमः। ओम नमूर्तिये नमः, नगाय नमः, अचिन्त्याय नमः, भयकृते नमः, भयनाशनाय नमः, अणवे नमः, वृते नमः। ओम कृशाय नमः, स्थूलाय नमः, गुण
ओम गुणभृते नमः, निर्गुणाय नमः, महते नमः, अग्रताय नमः, स्वग्रताय नमः, स्वास्याय नमः। ओम प्रांगवंशाय नमः, वंशवर्धनाय नमः, भारभृते नमः, कथिताय नमः, योगिने नमः, योगिशाय नमः। ओम सर्वकामदाय नमः, आश्रमाय नमः, शमनाय नमः, श्यामाय नमः, सुपर्णाय नमः। ओम वायुवाहनाय नमः, धनुधराय नमः, धनुर्वेदाय दंडाय नमः, दमित्रे दमाय नमः, पराजिताय सर्वसाय नमः, नियंत्रे नमः, नियमाय नमः, अयमाय नमः। ओम सत्ववते नमः, सात्विकाय नमः, सत्याय नमः, सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम अभिप्रायाय नमः, प्रियार्हाय नमः, अर्हाय नमः, प्रियकृते नमः, प्रीतिवर्धनाय नमः, विहाय सगतिये नमः। ओम ज्योतिषे नमः, सूर्ये नमः, उद्भुजे नमः, विभवे नमः, रविये नमः, विरोचनाय नमः, सूर्याय नमः, सवित्रे नमः। ओम रविलोचनाय नमः, अनंताय नमः, उद्भुजे नमः, भोक्ते नमः, सुखदाय नमः, नैग्जाय नमः, अग्रजाय नमः, निर्विन्नाय नमः। ओम लोकाधिष्ठानाय नमः, अद्भुताय नमः, सनातनाय नमः, सनातनतमाय नमः, कपिलाय नमः, कपिये नमः। ओम अव्याय नमः। 9 दलों के माध्यम से अर्चना पूर्ण हुई। आइए आखिरी 100 हम बड़े ध्यान से और प्रेम से करें। ओम स्वस्तिदाय नमः, ओम स्वस्ति कृते नमः, ओम स्वस्तिये नमः, ओम स्वस्ति भुजे नमः, ओम स्वस्ति दक्षिणाय नमः, ओम अरुद्राय नमः, ओम कुंडलिने नमः, ओम चक्रणे नमः, ओम विक्रमिणे नमः, ओम ऊर्जित शासनाय नमः, ओम शब्दातिगाय नमः, ओम शब्द सहाय नमः, ओम शिशिराय नमः, ओम शर्वरीकराय नमः, ओम अक्रूराय नमः, ओम पेशलाय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम शमीनांबराय नमः, ओम विद्युत्माय नमः, ओम वीतभयाय नमः, ओम पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः, ओम उत्तारणाय नमः, ओम दुष्टतग्ने नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम दुस्वप्न नाशाय नमः, ओम विघ्ने नमः, ओम रक्षणाय नमः, ओम सद्भ्यो नमः, ओम जीवनाय नमः, ओम पर्यवस्थिताय नमः, ओम अनंत रूपाय नमः, ओम अनंत श्रिये नमः, ओम जितमन्यवे नमः, ओम भयापहाय नमः, ओम चतुष्राय नमः, ओम गभीरात्मने नमः, ओम विदिशाय नमः, ओम व्यादिशाय नमः, ओम दिशाय नमः, ओम ओम अनादिये नमः, ओम भुवोभुवे नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम सुवीराय नमः, ओम रुचिरांगदाय नमः, ओम जन्नाय नमः, ओम जनजन्मादिये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम भीपराक्रमाय नमः, ओम अधारनिलयाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम पुष्पहासाय नमः, ओम प्रजागराय नमः, ओम ऊर्ध्वगाय नमः, ओम सत्पथाचाराय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्रणवाय नमः, ओम पनाय नमः, ओम प्रमाणाय नमः, ओम प्राणनिलयाय नमः, ओम प्राणभृते नमः, ओम प्राण जीवनाय नमः, तत्वाय नमः, तत्वविदे नमः, एकात्मने नमः, ओम जन्म मृत्यु जराधिगाय नमः, भूभुव ओम भूर्भुवः स्वसतर्वे नमः, ताराय नमः, सवित्रे नमः, ओम प्रपीतामहाय नमः, यज्ञाय नमः, यज्ञपतिये नमः, यज्वने नमः, ओम यज्ञांगाय नमः, यज्ञवाहनाय नमः, यज्ञभृते नमः, यज्ञकृते नमः, यज्ञिने नमः, यज्ञभुजे नमः, यज्ञसाधनाय नमः, ओम यज्ञान्कृते नमः, यज्ञगुहाय नमः, अन्नाय नमः, अन्नादाय नमः, आत्मयोनिये नमः, ओम स्वयं जाताय नमः, देखानाय नमः, सामगाय नमः, देवकी नंदनाय नमः, ओम षष्ट्रे नमः, ओम क्षितिशाय नमः, ओम पापनाशनाय नमः, ओम शंख भृते नमः, ओम नंदकिने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम शारंग धन्वने नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम रथांग पाणिये नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम सर्व प्रहरणा युधाय नमः, ओम सर्व प्रहरणा युधाय नमः, ओम सर्व प्रहरणा युधाय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राधा रमण चरण अर्पण मस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री विष्णु सहस्त्रनाम संकल्प की जय। आप सबने आज के दिन इस अद्भुत अलौकिक विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करके और अपने मन से ठाकुर जी के चरणों में अपने प्रेम को तुलसी दल के रूप में चढ़ाकर आपने ठाकुर जी के प्रति अपने प्रेम को और ठाकुर जी को भी अपने प्रति आकर्षित कर लिया है। भैया, इससे बड़ी ठाकुर जी को प्रसन्न करने की कोई सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि तुलसी महारानी के पास ही तो वो बल है कि ठाकुर जी के चरणों की भक्ति दे दे। ठाकुर, हम रोज तुलसी महारानी को जब जल देते हैं तो क्या कहते हैं? किसको मालूम है तुलसी प्रणाम श्लोक जो पाठशाला में सिखाया? वृंदायै तुलसी देव्यै। सुना दो भाई। हे राधा रमण।
कौन सुनाएगा? चलो आज एक को अवसर देते हैं, फिर हम उसके लिए गिफ्ट भेजेंगे। वृंदाई। ओके, योगेश नानवानी जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे बच्चे। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव भक्ति च कृष्ण भक्ति प्रकृति सत्वते नमः नमः। हे राधा रमन लाल, उच्चारण में त्रुटि है पर श्लोक सही है। पर उच्चारण इज इंपॉर्टेंट। Who will try one more time? आशुतोष पाठक जी। यस भैया, उच्चारण, ये तो विद्यालय है, इसकी में उच्चारण की तो बड़ी महिमा है। उच्चारण हैज टू बी परफेक्ट। करो बच्चे अनम्यूट। राधे श्याम मैया। यस, राधे राधे आशुतोष जी, सुनाओ। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति। उच्चारण त्रुटि। लास्ट चांस। किसको किसको किसको? स्वाति राजपूत, मुझे पता है आपको आता है, ये हमारे पुराने बच्चों में से नहीं दूंगी मैं किसी को। ओके, वैष्णव वेदांत। सही बोल देना भाई। कितने लोग YouTube में पहली बार देख रहे हो, कहेंगे राधे वाह। श्याम। राधे श्याम। राधे राधे। वृंद्यायै तुलसी देवायै प्रियायै केशवाय च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ये नैन मटक के किसके साथ कर रहे हो तुम भाई? नहीं, इधर ये चल नाम स्मरण। नैन स्मरण नहीं चल रहा है, वहां श्लोक स्मरण चल रहा है, जो लिखा भी है फिर भी उल्टा बोल रहे हो। बेटा, हम मम्मा है तुम्हारी, जितने बड़े तुम हो नहीं हो उससे ज्यादा हम तुमको जानते हैं, सबको दिल से। बताओ। एंड वन थिंग, थैंक यू, वो आपने हमारे सबके लिए दिए जलाए ना, वो मैंने देखा। थैंक यू। मतलब लव। चलो हम ऐसा करते हैं, हम ही सुना देते हैं, तो आप सब इसको याद करना। वृंदा यही तुलसी देवी यही प्रिया यही केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ये हम ठाकुर जी की भक्ति को अपने जीवन में उतार सके, तुलसी महारानी आपके पास वो बल और कृपा है, वो आप हमें दीजिएगा। ये तुलसी प्रणाम मंत्र अवश्य आप लोग याद करें, और आज के सुंदर संकल्प की पूर्ति की आप सबको खूब शुभकामनाएं। हम लोग मुंबई आ रहे हैं इस संडे, आप सबने रील देख ही ली होगी। पुणे और कौन सी जगह मुंबई के आसपास, नासिक और बैंगलोर थोड़ी है भाई, वाह। पुणे और नासिक से जो लोग आ सकते हैं वो जरूर आना, और हम लोग आपको वहां मिलेंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा हम लोग आप सबसे मिलने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो आई विल सी यू इन मुंबई। और जो लोग काशी आ रहे हैं, आपका खूब आनंद करना है संग में। हम लोग खूब मस्ती करेंगे, खूब हम लोग कीर्तन करेंगे, महाराज जी के संग का पूरा लाभ लेंगे, महाराज जी से कथा श्रवण करेंगे, सेशंस होगा, बहुत मजा आने वाला है भैया। जिसने अभी भी रजिस्टर नहीं किया करा लो, लास्ट मिनट पे मत हमारी खोपड़ी खाना भैया, नहीं हो पाएगा, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहे हैं। तो आप प्लीज कर लीजिए, and I will see you either there or definitely somewhere in this lifetime for sure. On this note, I extend my love to Priya Raman Lal, a lot of love to all of you, and I will see you all very soon. Shri Radha Raman Lal ki, sorry, Jai.